Good morning, candidates. This is regarding synonyms set 3. I have already posted two sets of synonyms, 10 words each, and this is the third set of synonyms. And yeah, my email ID is samba.s7 at gmail.com. You know that. And in case of any doubt, you can always write to me. You can also attend my live YouTube classes on quantitative aptitude, reasoning, English, and also current affairs, general awareness, banking awareness. Now, the first set of questions we have is set 3 here. In the following questions, out of the alternative, select the alternative which is similar in meaning of the given words. The first word is apportionment. First word is apportionment. Choice given allotment, break, accumulate, indifferent. अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है? सेपरेट करना. दैट इज मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपया है और उसमें से 200 रुपया किसी ए को देंगे और 200 रुपया बी को देंगे. लाइकवाइज अलॉटमेंट करना था, अपॉर्शनमेंट बोलता है. बाकी सब वर्ड का तो आपको मालूम हो जाएगा. ब्रेक का मतलब स्टॉप करता है और accumulate का मतलब meaning is getting accumulated, that is getting saved. And indifferent means not caring, not bothering about something. So that is what is known as indifferent. So the answer for one apportionment is A, allotment. Number 2, coalition. Choices given: alone, alliance, disintegration, perfection. So now what is the meaning that is for this? A synonym for this is B, alliance. Coalition means coalition parties. You must have heard that say 2-3 parties join together to make alliance. That is alliance. So here other words are easy. Alone means staying separately. Disintegration means separate karna, that is to divide them. Perfection, perfection means doing anything correctly, not in a different manner, not in a wrong manner. So that is perfection. Perfection का मतलब जो कुछ करते हैं वो तो ठीक से करवाना. और डिसइंटीग्रेशन का मतलब अब ये है, दैट इज डिवाइड कर देना. और अलोन का मतलब तो आप जानते हैं, अलोन का मतलब खाली एक जगह पर बैठना और किसी से बात नहीं करना, ये तो अलोन होता है. नंबर 3 क्वेश्चन इज रिवाइज. रिवाइज के लिए चॉइसेस गिवन: ऑल्टर, रिकंसिडर, पोस्टपोन एंड नेग्लेक्ट. इसमें तो आंसर होगा रिकंसिडर. Revise means you please revise your syllabus. That means you go through again. Or the government is revising the terms. That means government is thinking of reconsidering the terms. So other words तो आपको you can easily follow the other words. Alter means change करना. और postpone means आज नहीं करना तो कल करेगा, ये तो postpone करना. Postponing is not good. प्रीपोनिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. जो कुछ करना है सही समय पर करना है. नेग्लेक्ट का मीनिंग यू नो इट. नेग्लेक्ट इज टू नॉट कंसिडर समथिंग एज इम्पोर्टेंट, उसको छोड़ देना और नॉट वरीइंग अबाउट इट, वो ऐसा नहीं रखना है. रिवाइज के लिए आपको आंसर होगा रिकंसिडर. फोर्थ क्वेश्चन इज कैलिबर. कैलिबर के लिए द चॉइसेस गिवन आर एबिलिटी, स्ट्रेटनेस, shortcut, streamline. इसमें तो answer is for a caliber is ability. He has a good caliber. His caliber is rated very high. That means उनका ability बहुत अच्छा है. So that is the meaning for that. और दूसरा words तो आपको मालूम होगा. Straightness means doing things in a straight order way, not in a changed manner. Shortcut means attempting for something through shortcut, that is जल्दी करवाने के लिए. Streamline means आप जानते हैं
that is anything that is sent online, that is the program is on streamline, that means the program is going on. ये तो मीनिंग होगा कैलिबर के लिए. आपको मीनिंग होगा एबिलिटी. आपको अच्छा कैलिबर होना चाहिए. आप अंग्रेजी में अच्छा बात करना चाहिए. ये करने के लिए आप अंग्रेजी में सोचना चाहिए. ऐसा अपनी नया वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए. और उस एबिलिटी को आप सेंटेंस में फॉर्म करके आप यूज करना. यू हैव टू यूज योर एबिलिटी, दैट इज कैलिबर, बाय making use in sentences. Whenever you learn a new word, use it in sentences. That will help you a lot. Similarly, the question number 5, aberration. Choices given: anomaly, justification, intensification, deviation. Now, out of these 4 choices, which can be the answer? Aberration means doing, there is some, the things are not clear, that it is not correct, or there is some aberration in the rules. There is some aberration in the rules. And whereas other words, so the choice for aberration is anomaly. Anomaly means ठीक ठीक से नहीं है, things are not as per they should be. जैसे होना है ऐसा नहीं है, it is not given correctly. So that is the reason for the letter C, anomaly. Anomaly का क्या मतलब होगा? Anomaly meaning, anomaly के लिए आपको मीनिंग आता है anomaly. Anomaly yeah, anomaly is something that is unusual enough to be noticeable or seem strange. The government does computer checks of tax returns to find anomalies that might indicate fraud. ऐसा में भी कई वर्ड अंडरस्टैंड करने से उसको यूज करके देखना है. समझ गया? और अनोमली के लिए और कुछ सिनोनिम दिया ना क्या? देखते हैं, आपको कुछ मिलेगा तो बताएंगे. या so anomaly is something noticeably different. That is what it is, anomaly. So aberration के लिए answer is anomaly. Justification आप लोग आंसर जानते हैं. Justification का मतलब क्या है? That is जो कुछ हम लोग करते हैं उसको ठीक, it is correct ऐसा मपी आर्ग्यू करना, ऐसा मपी फेवर में बात करना, ये तो आप जस्टिफिकेशन बोलते हैं. जस्टिफिकेशन के लिए आपको मीनिंग आता है the action of showing something to be right or reasonable. Action of doing something that is reasonable. Justification of revolutionary action. So that is what is known as justification. समझ गया? Intensification of जान. Intensification means what? Doing something very severely, very forcefully. Deviation means what? Going away from the rules, changing the rules. So this is known as deviation. So अभी हम आपको 5 वर्ड बता दिया. Apportionment आंसर है आपको allotment. Coalition आंसर है alliance. Revise आंसर है reconsider. Caliber answer is ability. Or aberration, the answer is anomaly. So 5 words, 5 words we have seen now. Now we will see the next 5 words. But you see now here, by talking to you about one word, I have been telling about the meaning of the other 4 words also. So far we have covered 25 words. And if perchance you are not understanding any word, आप डिक्शनरी में जाके उसका मीनिंग देख लीजिएगा. You please go to dictionary and check up the meaning for that word. Maybe I would not have told it clearly to you. आपको अपना लैंग्वेज में चाहिए तो you can go and check it up. If you want to know in your language, Kannada, Telugu, Malayalam,
Tamil. You please go to that language dictionary and get to know the meaning. Very good. Next, sixth word is prophylactic. PROPHYLACTIC. इसके लिए आंसर्स दिया है एंटागनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव, परगेटिव. इसमें से आंसर होगा आपको, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? प्रोफिलैक्टिक. बोलिए, व्हाट इज द आंसर फॉर प्रोफिलैक्टिक? दिया है व्हाट आर द थिंग्स गिवन? आपको दिया हुआ है या एंटागनिस्टिक, देन उसका बाद में क्या दिया है आपको? उसका बाद में टॉक्सिक का, प्रिवेंटिव, परगेटिव. इसमें से आंसर है आपको प्रोफिलैक्टिक का प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव मीन्स कुछ आने का पहले प्रिवेंट करना. दैट इज आफ्टर गेटिंग फीवर you should not worry about it. You should take measures to prevent your getting fever, corona. So you should take steps like putting that mask. Then they have also told you must wash your hands frequently with soap water. That one, and also you must not get mingled up in groups because you will be getting corona. ए प्रिवेंटिव का मतलब ये है, अभी हम लोग कोरोना नहीं आने के लिए क्या करना है? मास्क वेयर करना है. इसके अलावा हम लोग का हाथ को दिन में 4 बार 5 बार सोप डाल के साफ करना है. इसका अलावा ग्रुप का अंदर में नहीं जाना है, इसलिए तो अब गाड़ी में नहीं जाना, इसलिए तो आपको लॉकडाउन दिया हुआ है. दैट इज नोन एज प्रोफिलैक्टिक. प्रोफिलैक्टिक का मीनिंग इज preventive. Now let me tell you the meaning of antagonistic. 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 What is the meaning of antagonistic? Antagonistic meaning is showing or feeling active opposition, hostility. That is किसी से दोस्ती नहीं, दोस्ती का ऑपोजिट करना, एनमिटी करना. और या सो दिस इज नोन एज एंटागनिस्टिक. बायोकेमिस्ट्री में फिजियोलॉजी रिलेटिंग टू एन एंटागनिस्ट और इट्स एक्शन. सो टॉक्सिक. टॉक्सिक का मतलब क्या है? बहुत बार हम लोग सुना होगा. व्हाट इज टॉक्सिक? TOXIC. What is the meaning of toxic? Toxic materials you should avoid. Toxic means it's poison. Like in Tamil call it as नच, poison बोलते हैं. Purgative का मतलब क्या है जी? हमको भी अभी याद नहीं आता है. Purgative, PURGATIVE. Purgative के लिए मीनिंग क्या आएगा? strongly laxative in effect. That is purgative means diarrhea, dysentery बोलता है ना, that is going away. That is purgative बोलता है. अच्छा, good. So the answer for 6 is what? C, preventive. Number 7th word, ecstatic. Ecstatic के लिए meaning given animated, enraptured, bewildered, fitful. Out of these things, the answer for that is what? Can you tell me what is the answer for the word ecstatic? ECSTATIC. Ecstatic meaning. What is the meaning of ecstatic? Ecstatic meaning, ecstatic means what? Pertaining to or being very happy. That is known as ecstatic, and that meaning is given as enraptured also, same. Now 8th word is umbrage. Umbrage के लिए given words are anger, shabbiness, premature, resentment.
अम्ब्रेज का क्या मीनिंग आता है आपको? द आंसर इज UMBRAGE, अम्ब्रेज। अम्ब्रेज के लिए मीनिंग आएगा ऑफेंस और अनोयंस, ऑफेंस और अनोयंस। अम्ब्रेज के लिए offense or annoyance. Similar word you get only in D, resentment. आपको anger जानते हैं, shabbiness भी जानते, shabbiness means not clear, premature means agree करना. So very good. Next is number 9, ludicrous. The meaning for the words given: anticipate, moderate, satisfaction, absurd. Ludicrous means something that is done in a very absurd manner, that is not in a correct manner. ठीक से नहीं करवाना, that is ludicrous. Anticipate means expecting, moderate means medium, satisfaction means happy. Then reprisal number 10, इसके लिए आंसर दिया है appreciation, retaliation, assessment, compensation. ये सब में reprisal means फिर टिक का टैग करना है, that is somebody is doing good to you, you do good. Somebody is doing bad to you, you start doing bad. So that is known as retaliation. So दोस्तों answers for 6 is C, preventive, prophylactic, preventive. 7, ecstatic, enraptured. B. Number 8, umbrage. Answer is D, resentment. Number 9, ludicrous. Answer is absurd. Number 10, reprisal. Answer is retaliation. So the answers are given here: 1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B, 8D, 9D, 10B. Check up with the concerned words. So thank you so much. I hope you enjoyed the session. Thank you so